Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Stri Dhan. So, Stri Dhan is a category of property. Okay, now let's see in detail. So, over which the various Smritikaras considered that a women did have rights. So, Stri Dhan क्या है? Is a category of property जिसमें various Smritikaras कहते हैं कि women did have right. So, Stri Dhan means women property. Stri Dhan means women property, but it referred especially to a certain special kind of movable property that is given to a woman on the various occasions during her lifetime. So, it's a special kind of movable property जो कि विमेंस को ड्यूरिंग वेरियस ओकेजन्स पे दिया जाता था ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. अब इसमें क्या क्या आ जाता था? सो देयर आर द वेरियस प्रेजेंट्स in the forms of jewelry, clothes, household articles, etc. So it was basically given by her parents at the time of marriage के टाइम पे जो दिया जाता था, और by her relatives, that is her father, brother, etc. on the various occasions or during festival और किसी भी एक इवेंट पे. ओके, नाउ जो धर्मशास्त्रास हैं, धर्मशास्त्रास disagreed about the extent to which स्त्री धना was to be considered the permanent property. अब disagreed करता है धर्मशास्त्र that जो स्त्री धन है it was not a permanent property. ये permanent property नहीं है as per the धर्मशास्त्रास of a woman, because they generally agreed that it was to be passed on from mother to daughter, और ये पास होती रहती है फ्रॉम मदर टू डॉटर. ओके, नाउ बेसिकली there are the various historians along with the sociologists which examine the changing relationships between the women and property. Changing relationships between the women and property in the Brahminical text, that is the time period starting from Rig Veda to the 5 to 6 centuries. So by the time Smritis and Puranas, जो Smritis and Puranas का जो टाइम है, Smritis plus Puranas का जो टाइम है, now यहाँ पे जो women's की जो position है, that is the women's are relegated to a position of almost complete subjugations और subordinations. ओके, तो वो टोटली डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पे, एंड दिस सबसर्वियंस, एंड इट वाज ट्रीटेड एज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, और उसको पार विमेंस को ऐसे कंसिडर किया जाता था दैट शी इज आ पार विद द शूद्रास. नाउ विमेन हैड अ लो प्रायोरिटी अमंग द क्लेमेंट्स टू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इन द अर्ली धर्म सूत्रास, बट जब सेकेंड सेंचुरी आया, the various lawgivers recognized, that is during the 2nd century onwards, various lawgivers, they recognized and gave the women's right to the inheritance. Okay, and it should be noted however that this was only applied to Stri Dhan. Now according to Manusmriti, Stri Dhan includes 6 types of gifts. Those received before the first, that is the nuptial fire. Second is the bridal procession. Third is those given or taken as a token of love by father-in-law or mother-in-law, or basically those received from her brother, father,
6 is mother. But however it did not include the inherited property, that is जो inherited property है वो include नहीं है इसमें, okay, as per the मनुस्मृति. Or even the property acquired by the women through her own labor, it was also not included. जो regular property rights थे, it was continued to be essentially governed by the rules of patrilineal inheritance, that is फादर टू, जो रेगुलर प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं इट वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फादर टू सन, ओके, दैट इज मेल. एट द सेम टाइम जो ये इनहेरेंट मूवेबल प्रॉपर्टी का है इट वॉज सिग्निफिकेंटली एक्नॉलेज एंड एक्सपेंडेड इन द लेटर सेंचुरीज. ये जो विमेंस के राइट हैं रिगार्डिंग द इनहेरेंट एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी राइट्स ये फर्दर एक्सपेंड हुए इन द लेटर सेंचुरीज के, दैट इज द गुप्ता एंड द पोस्ट गुप्ता पीरियड्स. ओके, अब ये क्यों हुए, दैट वॉज इट वॉज ये जो राइट्स है इनहेरिटेंस इट वॉज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द गुप्तास एंड द पोस्ट गुप्तास. और इसका एक रीजन था बिकॉज इन ऑर्डर टू मेंटेन द फैमिलीज कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, उसका फैमिली का कंट्रोल बना रहना चाहिए ओवर प्रॉपर्टी का, एट द सेम टाइम टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्टीटिंग, दैट इज बीइंग टेकन ओवर बाय द स्टेट. जैसे अगर किसी का भी कोई सन नहीं है तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो स्टेट कन्फिस्केट कर लेगा प्रॉपर्टी को और चीट कर लेगा. दैट इज द वाई द वीमेंस आर गिवन दिस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी राइट्स. सो इन केस अगर कोई मेल हायर नहीं है तो वीमेन को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी. सो इस मोर अ मैटर ऑफ कंपल्शन, ये कंपल्शन की वजह से राइट दिया गया है, बट इट वॉज नॉट दी एज हम देख नहीं सकते ऐसे विमेन एम्पावरमेंट की तरफ इसको. ओके, सो इट वॉज अ मैटर ऑफ कंपल्शन. नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस. So consider the following statement regarding Stridhan. So Stridhan means certain special kind of women movable property. Second statement says that women have a higher priority among the claimants to inheritance property in the early Dharma Sutras. So in order to attempt this question, please pause this video screen and write your answer in the comment section below. So you have to choose the correct answer. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2. So its correct answer will be A, that is a 1 only. In second statement, women having a low priority, उसको हमेशा lowest priority दी जाती थी among the claimants to inherited property in the early Dharma Sutras. Okay, so if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching.